Hello, good morning students. Today we will discuss about permutation and combination. Yes, but before that permutation and combination we explain fundamental principle of multiplication theorem and second is fundamental principle of addition. Yes, you know in earlier class and class 10th you already discussed. Suppose you have two events. First is coin. आपने coin को toss किया. Then you have two outcomes. And second event, suppose you throw a die. Then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? Clear? Suppose given that you find the total outcomes, find the possible outcomes when coin and dice throw together. Yes, same time. दोनों को सेम टाइम थ्रो किया गया. Then A and B या both, इन दोनों का मीनिंग यही है, दोनों को सेम टाइम थ्रो किया जाता है. देन वी हैव टोटल आउटकम्स H with 1, H with 2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Then we have possible outcomes 12. Then total outcomes is 12. 12 it means 2 into 6. That is multiplication of their outcomes. But if question given that you find the total outcomes if A or B, या तो A थ्रो किया जाए या B थ्रो किया जाए, then total outcomes is H, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or means या तो coin या dice, both not the same. Then we have total outcomes 2 plus 6, 8. And now, clear? You know, if given that both the event occur together, then multiplication theorem, and if one of them, then addition theorem. Simple, very important concept for permutation combination. बेसिकली स्टूडेंट्स को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही प्रॉब्लम आती है कि कहीं वो क्वेश्चन में ऐड कर देता है एंड कहीं भी वो जो है उसको सबट्रैक्ट कर देता है. क्लियर? एनी प्रॉब्लम सर? एनी डाउट? नो? क्लियर? चलिए, जैसे सपोज गिवन दैट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर यस कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर. क्वेश्चन है क्लियर? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ठीक है, how many 3 digit numbers can be formed using 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, clear? Condition given है, suppose repetition is allowed. Then 3 digit number, yes, you know unit place, 10 place and 100 place. Then we can use this place 1, 2, 3, 4, 5 times, again 5 times, again
5 times. Yes, and you know that 3 digit नंबर कैसे बनेगा? जब ये तीनों एक साथ फिल किए जाएं, then 5 into 5 into 5 it means 125. Got out? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि रिपीटेशन इज अलाउड, देन 5 times 5 times 5 times. एनी प्रॉब्लम सर? क्लियर? चलो नाउ फैक्टोरियल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल मीन्स जैसे सपोज 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 into 4 into 3 till natural number 1. You can write 1 into 2 into 3 till 5. No problem. 4 factorial, you can write 4 into 3 into 2 into 1. Clear? इसकी वैल्यू 120 आएगी एंड इसकी वैल्यू 24. Yes? So you can write 5 factorial 5 into 4 factorial. यानी कि n फैक्टोरियल यू कैन राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. एनी प्रॉब्लम? अगर सपोज आप n को 1 से रिप्लेस करते हैं तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, यानी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. सेकेंड थिंग सर 5 factorial is equal to 120. 3 factorial, 3 into 2 into 1 it means 6. 2 factorial, 2 into 1 is 2. 3 factorial into 2 factorial is equal to 12. Clear? Clear? But अगर आप 6 factorial की वैल्यू निकालते हैं तो 6 into 5 into 4 till 1 तक, that is 720. So 6 factorial not is equal to 3 factorial 2 factorial, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. Yes? Now 3 factorial plus 2 factorial, it means 6 plus 2 is 8, not is equal to 5 factorial. तो इससे क्या पॉइंट निकले सर कि 0 factorial always 1, a into b factorial not is equal to a factorial b factorial, a plus b whole factorial not is equal to a factorial b factorial. Yes? Clear? And if a factorial is equal to b factorial, then we can say a is equal to b, or a is equal to 1, b is equal to 0, or a is equal to 0, b is equal to 1. We have 3 conditions. यानी कि अगर हम दो फैक्टोरियल्स की वैल्यू कंपेयर करें then we can not find exact value. तो ऑलवेज इसकी वैल्यू निकाल कर ही हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. एनी प्रॉब्लम? क्लियर? First, multiplication when 2 events occur together. Addition when one of them. Clear? Factorial. Factorial 5 it means 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई. n factorial you can write n into n minus 1 factorial. If n को 1 से replace करें then 0 factorial is equal to 1. After that we have some observation, some standard points. 0 factorial is equal to 1, a into b factorial not is equal to a factorial b factorial, a plus b का whole factorial not is equal to a factorial plus b factorial. And if a factorial is equal to b factorial, then we can say that a is equal to b, or a is equal to 1, b is equal to 0, or a is equal to 0, b is equal to 1. Any doubt? And some other point, factorial signs we can use are 2 type, this type या this type. तो आप इसको ये भी लिख सकते थे सर 5s. Both sign can use. Any doubt? Clear? Clear?
थैंक यू सो मच।